अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। तो आज हम बात करते हैं अबाउट द मैकेनिज्म ऑफ द सेल इंजरी कि सेल इंजरी हमारे साथ किस तरह से होती है। तो इट डिपेंड्स अपॉन द ड्यूरेशन ऑफ द स्टिमुलस, इंटेंसिटी एंड severity of the injury। ठीक है। If the stress is for short duration, the cell shows adaptation, but if the stress continues for a longer time, the cell moves toward the cell injury। इसी तरह the cell injury depends upon the nature of the cell, means the type of the cell, its genetic makeup and the power of adaptation। अगर हम एग्जांपल है न्यूरोनल सेल की, so they are highly sensitive to the cell injury and they show cell injury within 2 minutes। इस तरह जो कार्डियक सेल होते हैं, they are injured within 20 to 30 minutes। और जो skeletal muscle cell होते हैं, they are highly resistant and show cell injury within 3 hours। pathways of the cell injury. The cell injury occur because of the depletion of energy, mitochondrial damage, influx and loss of the calcium ion homeostasis, accumulation of the oxygen derived periodical, defects in the membrane permeability, and the loss damage to the DNA and the protein। तो सबसे पहले हम बात करते हैं about the depletion of the ATP। The deficiency of energy occurs because of the hypoxia, which occurs due to the ischemia। और hypoxia में हमारे साथ क्या होता है, ऑक्सीजन डिफिशियंसी होती है। तो अगर ऑक्सीजन डिफिशियंसी होगी तो हमारे साथ माइटोकॉन्ड्रिया में ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन नहीं होगा। जब वो नहीं होगा तो हमारे साथ एटीपी नहीं बनेगा। ठीक है। जब एटीपी नहीं बनेगा तो हमारे साथ जो सोडियम पोटेशियम एटीपेस पम्प है वो काम नहीं करेंगे, तो सोडियम बाहर नहीं जाएगा, अंदर एकमुलेट होगा, वाटर भी अंदर आएगा, तो उसकी वजह से हमारे साथ क्या होगी, सेलुलर स्वेलिंग होगी। इसी तरह हमारे साथ इन द the deficiency of oxygen, anaerobic glycolysis occur, which leads to a formation of the lactic acid, hence causes acidosis। इस तरह हमारे साथ for the maturation of protein, uh, ATP is required and the absence of ATP हमारे साथ जो प्रोटीन की मेच्योरेशन है वो नहीं होगी और डीनेचर प्रोटीन फॉर्म हो गया। इसी तरह there is also release of cytochrome C from the mitochondria which induce a process of apoptosis। इस तरह हमारे साथ जो कैल्शियम पंप्स होते हैं, they are also ATP dependent। In the absence of ATP, these pumps fail and there is accumulation of calcium ion occur which leads to accumulation of the various enzyme, activation of various enzyme like proteases, lipases and endonucleases which causes damage to the cellular organelles। अब दूसरा आता है हमारे साथ माइटोकॉन्ड्रियल डैमेज। तो द माइटोकॉन्ड्रियल डैमेज occur because of the hypoxia, ischemia, toxin, oxidative stress or the membrane damage। And due to the mitochondrial damage causes the formation of the mitochondrial permeability pores, and due to these pores there is a loss of the leak out of the proton from the mitochondria, and hence there is no concentration gradient maintained and there will be no oxidative phosphorylation occur and hence no ATP will be formed। इसी तरह there is also leak out of the cytochrome C which induces the process of apoptosis। तो इसमें क्या होता है, हमारे साथ जो माइटोकॉन्ड्रिया में पोर्स फॉर्म होता है जिसकी वजह से प्रोटीन लीक आउट करता है और ग्रेडियंट मेंटेन नहीं होता, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन नहीं होता है। इसी तरह साइटोक्रोम सी भी जो है ना वो लीक आउट करता है, वो एपोप्टोसिस को इंड्यूस करता है। तीसरा हमारे साथ आता है इन्फ्लक्स ऑफ कैल्शियम आयन एंड लॉस ऑफ द कैल्शियम आयन हेमोस्टेसिस। ठीक है। नॉर्मली साइटोप्लाज्म में जो कैल्शियम आयन की कंसंट्रेशन होती है वो लो होती है एंड इट इज मेंटेन बाय द एटीपी डिपेंडेंट कैल्शियम आयन चैनल्स। तो अगर हमारे साथ ड्यूरिंग इस्कीमिया और ड्यू टू टॉक्सिन हमारे साथ अगर ये कैल्शियम चैनल जो है ना वो काम छोड़ जाए, ठीक है, तो हमारे साथ क्या होगा, कैल्शियम अंदर एक्युमुलेट होगा एंड देयर इज आल्सो रिलीज ऑफ कैल्शियम फ्रॉम द माइटोकॉन्ड्रिया एंड द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो इंट्रासेल्युलरली कैल्शियम आयन की कंसंट्रेशन क्या होगी, ज़्यादा होगी एंड द कैल्शियम आयन का एक्टिवेशन ऑफ प्रोटीएसेस, एंडोन्यूक्लियसेस, फॉस्फोलाइपेसेस। द प्रोटीएसेस cause damage to a cytoskeleton। इसी तरह जो न्यूक्लियसेस होते हैं causes damage to a डीएनए एंड आरएनए। इसी तरह जो फॉस्फोलिपिड्स होते हैं, दे causes damage to the cell membrane। ठीक है। तो which leads to the hence the intracellular calcium high level of intracellular calcium ion leads to the cell injury। चौथा हमारे साथ आता है defects in the membrane permeability। So the membrane can be damaged directly by the toxin, physical or chemical agents, or the certain complement factors, and the membrane can also be damaged indirectly by the reactive oxygen species or the calcium-dependent activation of the phospholipase enzyme, which causes damage to the phospholipids। Due to these injuries, there is increase in the permeability of the plasma membrane occur, ठीक है, and there is loss of the intracellular osmolarity and the sodium and calcium ion accumulate inside the cell which causes the swelling of the cell and also activate various enzyme which causes damage to the cell। If the mitochondrial membrane permeability is increased, there will be no oxidative phosphorylation occur। इसी तरह हमारे साथ जो साइटोक्रोम सी है वो भी रिलीज होता है जो कि एपोप्टोसिस को इंड्यूस करता है। If there is lysosomal membrane damage occur, there will be the release of the hydrolytic enzyme which causes autolysis of the cell and leads to the cell injury। अब आ जाता है हमारे पास डैमेज टू डीएनए एंड प्रोटीन।
तो सबसे पहले डैमेज टू प्रोटीन किस तरह होता है, तो ड्यूरिंग द स्ट्रेस कंडीशन द प्रोटीन सिंथेसिस इंक्रीजेस, ठीक है। ये साइटो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे जो है ना हमारे साथ स्ट्रेस बढ़ता है और प्रोटीन सिंथेसिस हमारे साथ इंक्रीज होती है, तो हमारे साथ कुछ मिसफोल्डेड प्रोटीन्स जो है ना वो फॉर्म होते हैं, ठीक है। एंड दिस मिसफोल्डेड प्रोटीन आइदर एक्टिवेट्स द एपोप्टोसिस, ठीक है, या दे आइदर एक्टिवेट द चेपेरॉन्स प्रोटीन, और चेपेरॉन्स प्रोटीन का क्या करता है, दे आइदर इनहिबिट द फॉर्मेशन ऑफ मिसफोल्डेड प्रोटीन, आइदर कन्वर्ट these misfolded protein into their mature form, ठीक है। अब damage to DNA occur because of the radiation or toxins, and this and denatured DNA causes activation of the p53 gene, which either repair the DNA molecule or either induce the process of apoptosis. And if there is any mutation in this gene occur, it leads toward the neoplasia. इस तरह हमारे साथ जो inflammation है, it also leads toward the cell injury. And the inflammatory cells like neutrophils, macrophages, complement factors, and the antibodies, they increases the cell injury, improve the cell injury. अब आ जाते हैं about the reactive oxygen species. So these are the oxygen derived free radical, and they are highly unstable and they have unpaired electron, and they are highly reactive. And the free radicals include the superoxide anion hydrogen peroxide the radical, which includes two unpaired electron. इस तरह हमारे साथ जो hydroxyl radical है, they contain three unpaired electron, and the peroxynitrate ion, which is formed by the reaction of the nitric oxide released by endothelial cell with the superoxide ion. और जब एक दफ़ा हमारे साथ ये पीरियडिकल्स फॉर्म होते हैं, देन दे अंडरगोस ऑटोकैटालिटिक चेन रिएक्शन, और ये फिर हमारे साथ खुद फॉर्म होते हैं, ठीक है। और नॉर्मली सेल में जो है ना देयर इज़ अ बैलेंस बिटवीन द रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज एंड द एंटीऑक्सीडेंट। जब हमारे साथ सेल में रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज जो है ना वो बढ़ेंगी, या हमारे साथ जो एंटीऑक्सीडेंट्स है उसकी कंसंट्रेशन हमारे साथ कम होगी, तो सेल मूव्स टुवर्ड द सेल इंजरी। अब हमारे साथ कौन-कौन से प्रोसेस में ये पीरियडिकल्स फॉर्म होते हैं, तो इट इज़ फॉर्म इन द माइटोकॉन्ड्रिया ड्यूरिंग द नॉर्मल respiration or oxidation reduction reaction. इसी तरह they are also formed by the absorption of the ionizing radiations like UV light, X-rays, etc. They are also formed by the leukocyte during the normal inflammatory reaction. Similarly, the enzymatic metabolism of drugs that occur in the peroxisome, that also leads to the formation of the free radicals. इस तरह जो हमारे साथ ट्रांजिशन मेटल्स होते हैं like iron and copper, if they are present in free form in the plasma, they may also lead to the formation of the free radicals. Normally the iron is bound to the ferritin, and the copper binds to cytoplasmin, but if the concentration of this plasma protein decreases, then free radicals will be formed. इसी तरह जो ischemic reperfusion injury, it also lead to a formation of the free radical. अब हम आ जाते हैं about the effects of the free radical on the body, on the cell. It causes lipid peroxidation, it causes a cross-linking and misfolding of the protein. Similarly, it also causes damage to the DNA and RNA. So all of these three are the negative impact. अब इसका positive impact क्या है periodicals का, तो जो हमारे साथ super oxide ion होते हैं, it is converted into hydrogen peroxide ion, which is then converted into the hypochlorous acid. And all of these three periodical causes damage to the microbe, or they kill the microbe, which is known as the respiratory burst, and it is a positive impact of the free radical. अब आ जाते हैं about the antioxidants. So antioxidants are the substances which either inhibit the formation of the free radicals or they neutralize the free radical. Normally जो oxygen होता है, it is oxidized into the superoxide ion in the body, which with the help of superoxide dismutase enzyme, it is converted into the hydrogen peroxide. And the hydrogen peroxide is oxidized by the iron molecule, and the iron is converted into a paired form, and it converts the hydrogen peroxide into the two hydroxide radicals, which are the most reactive free radical, and this reaction is known as the penton reaction. अब जो एंटीऑक्सीडेंट्स है ये हमारे साथ या तो न्यूट्रलाइज कर देते हैं रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज को, या उसकी फॉर्मेशन को इनहिबिट करते हैं. द एंटीऑक्सीडेंट्स इंक्लूड द एंजाइम्स, प्लाज्मा प्रोटीन, विटामिन्स. द एंजाइम इंक्लूड सुपरऑक्साइड डिस्म्यूटेज, कैटालिसिस एंजाइम, ग्लूटाथियोन peroxidase, and these two enzymes causes the conversion of hydrogen peroxide into the water molecule. Plasma proteins include the transferrin, which binds the iron. इसी तरह हमारे साथ cytoplasmin, which bind the copper, inhibit the synthesis of the reactive oxygen species. इसी तरह जो vitamins है, they include vitamin A, C and E. अब हमारे साथ आता है टॉक्सिन. द टॉक्सिन्स आर द सब्सटेंसेस व्हिच causes damage to the cell. ठीक है, and these toxins may be exotoxins which include the pollutants, poisons, or the drugs, and they may be the endotoxins which are produced inside the body, and they include the hyperlipidemia, high level of lipids, high glucose molecule, or the high
concentration of the unconjugated bilirubin. ठीक है, अब the toxin act either directly or indirectly. Directly by binding to the cellular components, like हमारे साथ अगर एग्जांपल ले रहे HgCl2 की mercury chloride poisoning की, तो mercury binds to a sulfhydryl group and inhibit the ATPase dependent transport of the ion, and the toxin also act indirectly by converting to the more reactive toxic molecules like carbon tetrachloride, which causes damage to the liver cell by forming the reactive oxygen species. अब हम आखिर में आ जाते हैं about the ischemic reperfusion NG. So when the cell is under stress due to the ischemia, the blood supply toward the cell is reduced. But when suddenly the blood supply increases toward the tissue, there is reperfusion occur, then the reperfused blood causes damage to the cell because due to increased blood supply, there is a high concentration of the oxygen supply toward the cell, and this whole amount of oxygen cannot be reduced by the mitochondria and is oxidized to the uh, reactive oxygen species. तो हमारे साथ जो ऑक्सीजन होता है ज़्यादा कंसंट्रेशन में वो यूटिलाइज नहीं होता और वो हमारे साथ ऑक्सीडाइज होता है टुवर्ड्स द reactive oxygen species which are highly toxic and causes cell injury. इसी तरह हमारे साथ जो blood supply increase होते हैं तो it causes the recruitment of leukocytes, macrophages, neutrophils, and complements, which causes inflammation, reactive species formation, and initiate the immune response, hence worsen the cell injury.